Good morning all, and keep your cameras on. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, if you will keep your cameras on, again you will be removed. Good morning, ma'am. Good morning. Do you have any questions for from the last class? Yes. Any presentation, any story you're telling me for the narrative style of writing? Yes. Any questions? परविंदर, आप कुछ कह रहे हो तो माइक्रोफोन ऑन करके बोलो बेटा. You are saying something with microphone muted, huh? Good morning, ma'am. Okay. गुड मॉर्निंग मैम. तो मैंने पिछले बार वार्निंग दिया था आप लोगों को, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है. Why do you want to make your life simple? Why make your life simple? Life will only be simple after you work hard now. Things will be running very smooth. If you do your homework and classwork, later your life will be very good. It will be simple. It will not be complicated. But if you try to find yourself shortcuts, education does not have any shortcut. You cannot do smart work unless you do hard work. For any kind of smart work, you need to do the hard work. ठीक है, पिछले क्लास में किसने कहा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखा तो ही ना वो क्या लिख रहा है. He just clicked the screenshot and that's it. But what you need to do is you need to write down some points. And when you write down, you will remember the things you have written. ये अंशु तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा होता है. Why can't you keep your camera? पता नहीं. Why do you like people to listen to what is happening in your house? हम लोग सुनना नहीं चाहते. We don't want to listen to what is happening in your house. कौन तुम्हें डांट रहा है, कौन तुम्हें पुकार रहा है, what is happening? We are not interested. We are only interested for you to sit in front of the camera, listen, interact, ask questions. So this is supposed to be a class, no? You cannot multitask when you are attending a class. Multitask कर सकते हो क्या? क्लास भी कर रहे हो, घर में भी बात कर रहे हो, कुछ कुकिंग भी कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, किसी गेस्ट को भी एंटरटेन कर रहे हो, और भी कुछ काम कर रहे हो. You can't do this. कर सकते हो क्या? ये अभिषेक को बड़ी हंसी आ रही है. मतलब ये ऐसे ही करता, मतलब कि थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा वो भी. चलो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं और पापा का भी कुछ काम कर दे रहे हैं, माँ का भी कुछ काम कर दे रहे हैं, बगल से कुछ सामान भी खरीदने चले जाते हैं, लौट के चले आते हैं 2 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में. और फिर तुम्हारे दोस्त सिफारिश करते हैं कि मैम नेटवर्क इशू से वो हट गया था, उसको फिर ले लीजिए अंदर. ये सब तुम लोग का जो गिमिक्स है ना, ट्रिक्स है, हम लोग जानते हैं इसको. डोंट डू दिस. ठीक है, बगल से चाय पी के चले आते हैं. ठीक है, वीडियो तो क्लिक कर ही लेंगे, ये तो कर ही जाएंगे, कर ही लेंगे. एग्जाम का क्या है, पास तो कर ही जाएंगे. मतलब ये इस तरह का थॉट प्रोसेस तुम लोग का रहता है ना, मल्टीटास्किंग. कोई ये भी नहीं कहे कि मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था. ठीक, I attended all the class and ma'am you have given me 0. जैसे अभिषेक कुछ और काम कर रहा है. अभिषेक सिंह कर क्या रहे हो तुम? यस मैम. या मैम वो नोट्स मैम मेरे थोड़े बचे हुए थे मैम, एक्सपोजिटरी के मैम, नैरेटिंग स्टाइल से मैम, वही देख रहा हूँ. अच्छा मैम एब्सेंट था मैम 4-5 दिनों से मैम, इसलिए. हाँ, you are absent for the last 4-5 days. यस मैम. Which I know. मैम वही बचा हुआ तो वही कर रहा था.
ठीक है, तो बाद में करने का है ना। मेरे क्लास के टाइम में तुम नोट्स बना रहे हो। नो मैम, बस वो देख रहा हूँ कहाँ से बचे And हैं। I'm telling you, I've told you again, time and again, I've told you. Again and again, I've told you. This communicative English is one thing which can either take you, enhance your career, it can elevate your career, or it can drag you down. Good morning, ma'am. Yeah, why only communicative English? All the classes. You cannot multitask. ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, XYZ भी कर रहे हैं. You can't do this. हाँ, एडमिट कर लीजिए, वो तो है तुम लोगों का, तुम लोग के दोस्त है जो कुछ. Good morning, ma'am. हाँ. You cannot multitask. What is happening? हाँ, मैंने कहा you cannot multitask. For one reason, focused. Stay focused. So let us continue with the narrative writing style, and which is like to tell a story. I told you in the last class I will be taking presentations from students to give me an example of what is narrative writing style. Has anybody prepared anything? किसी ने प्रिपेयर किया क्या? कोई स्टोरी, कोई पोइट्री, एनी स्टोरी which is anecdote, any story which is real, which is fictional, any story book which you have read, any story which you have, any film which you have seen, you like the story. देखिए, असाइनमेंट्स आप नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा. Presentations, assignments are presentations also, and we need to mark you, no? Monthly assessment revision quiz also means presentations. I can assess your understanding in any form. It can be a written test, it can be, now in online classes I cannot take the written test, but yes, I can ask you orally. Like, oral questions can be always there. So has anybody prepared for the narrative writing style? Don't waste time. If it is yes, say yes. If it is no, no. Nobody. Oh, this is a real lazy class. Hmm? रविराज, तुम अभी तो ज्वाइन किया हो ना? अभी जो ज्वाइन किया. Have you prepared any presentation on narrative writing style? क्या कोई बता सकता है कि what is narrative style? Hello? Yes, ma'am. Yes, बस परविंदर है आंसर कर रही है आजकल. Ma'am, narrative writing style हमको is लगता है कि स्टूडेंट ऑफ द वीक हम देते हैं ना हर किसी को, मतलब हर किसी को नहीं, स्टूडेंट ऑफ द वीक परविंदर को देना पड़ेगा, इसलिए कि एवरी टाइम शी इज आंसरिंग. जो स्टूडेंट ऑफ द वीक होते हैं ना, they always are graded, they are getting extra marks. तो आपकी क्लास में तो लगता है कि स्टूडेंट ऑफ द वीक परविंदर ही होगी, हर क्लास में आंसर कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है. No ma'am, I am also there. Abhishek, Yes you ma'am. are absent for 4 days, so you keep quiet. Student of the week can only be student of the week बन सकते हो, student of the month बन सकते हो. Yeah. If you have shown your abilities, your skills, your improvement, then you can, of course. Yes, Parvinder has improved. I think in offline classes she was very participative and interactive, but then because of some, I don't know what issues, some concerns, she was quiet, and now again she's getting back in your usual formal self, vibrant self. तो अगर पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आप बन सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक, student of the month. There can also be students, a group of students who have done well. Now look, in my class I'm telling you very frankly, let it talk technical. So I am talking business in your class, business English class.
So I am talking business, and this is a process which I'm going to tell you each and everyone. Understand this. In my classes, students are divided into 3 categories. How many categories, Sabeta? 3. 3. The first category is the quality circle. What is it? What is it? Quality circle. Okay, make a circle in your copy. Make a circle. Make a circle. Let me explain. How many categories are there? 3. First is the quality circle. Make a circle, Parvinder. No, this is not a maths class. Okay. Quality circle. So draw a circle. Done, ma'am. Done. And let me see if I can find a circle over here. I'm not good at computers, but then I want a circle with a smiley. Not able to find any circle. Okay, let it be. हाँ ये सर्कल हो गया. सॉरी, इस सर्कल में कौन कौन होंगे? डोंट माइंड माई, आई एम बैड एट कंप्यूटर्स. तो ये हो गया नंबर 1. तो क्वालिटी सर्कल में कौन कौन से स्टूडेंट रहेंगे? इसमें किस किस के नाम हम डालेंगे? अभी किसी के नाम नहीं है. Second is the trying circle. People who are trying. People who are Trying. okay. Leaves in order कहाँ से? So आप अपना बनाइए, हमको यहाँ पे करने दीजिए जो हम कर रहे हैं. So this is the trying circle, right? The names will be put over here. Quality circle, names will be put. Trying circle, names would be put. And the third will be नाम दीजिए थर्ड सर्कल का, बताइए. द लेजी सर्कल. चलो आप नहीं बोल रहे, हम बना रहे हैं, अपना अपना नाम दे रहे हैं आप लोग. So this is the lazy circle. चलिए, क्लियर है? Yes, क्लियर ma'am. है? क्लियर है. अब क्वालिटी सर्कल में who are the students who can be included in the quality circle? रविराज कुछ सोचो तो अब बताओ. Excuse me, ma'am. क्वालिटी सर्कल में कैसे कैसे स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाएगा? मैम रोल नंबर 83 का लीव हो गया है वो. मैम कुछ अच्छा, ठीक बच्चे है. को मेरा leave हो क्वेश्चन गया, कुछ और, मेरा क्वेश्चन कुछ और है. क्वालिटी सर्कल में कैसे कैसे स्टूडेंट्स को डाले जाए अकॉर्डिंग टू मी? तो क्वालिटी सर्कल में कौन कौन लोग हो जो सकते हैं? बहुत बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो, थोड़े स्मार्ट हो, जिनकी स्पोकन अच्छी हो, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी हो.
पर्सनालिटी से क्या Yes, मतलब ma'am. आपको है? मैम मैम पर्सनालिटी से क्या मतलब मैम आपको है? मैम मैम जिनका मैम कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो इन बस इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बोलता है लेकिन पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करता, Confidence चुपचाप से। बैठा रहता है। मैम जो क्लास में एक्टिव हो। somebody who is good at academics, जो हर चीज में जो हर क्वेश्चन पे यस सर यस मैम आंसर उसका सही मिले, सटीक मिले, जो प्रेजेंट रहे हमेशा, जो पार्टिसिपेट करे जो टाइम टू टाइम। पार्टिसिपेटिव रहे, रिसेप्टिव रहे, कम्युनिकेटिव रहे, somebody who asks a lot of questions, somebody who wants to learn, somebody who wants to improve, somebody who is focused in the career. ऐसे लोगों मैम yes, पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी तो ठीक है, मैम पंक्चुअल है, मैम बोल मैम responsible, somebody who is responsible. वे ऑफ स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन में मतलब कि उसका मतलब डिसिप्लिन झलकना चाहिए, मैनरेबल होना हाँ, चाहिए। ये नहीं कि आपके क्लास में जो बहुत कंसर्न्स आता रहता है, इश्यूज आते रहता है, टीचर इज टीचिंग एंड यू गाइस आर डेरिवेटरी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो कहाँ गया मेरा सर्कल सब? हाँ, रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए सब। somebody who is interactive, somebody who is disciplined, somebody who is willing to learn, somebody who is always answering questions, always has a question, is responsive, is responsible, is interactive, is receptive. These are the people whose names will be put inside this quality circle. तो आप में से कितने लोग हैं जो मुझे लगता है कि इसमें डालने चाहिए? अभी तो किसी का नाम नहीं है, ये आज से स्टार्ट कर। तुम कहाँ से अभिषेक? तुम तो यू आर हार्डली देयर। अच्छा, ये अभिषेक राज का ही नाम उठा रहा है, वो हम जब बोलेंगे तब ना। और दी स्टूडेंट्स विल बी इन द एकलव्य ग्रुप। हम लोग का एक सिमेज में एक एकलव्य ग्रुप है जिसमें ये लोग क्वालिफाई करते हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि टेल मी द बेस्ट नेम्स ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स इन योर क्लास इन BBA 1। तो मेरे फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि हाँ मेरा क्वालिटी सर्कल है ना, मैं फाइल में देख के बताती हूँ। मैम BBA 2 also. हाँ, I said when I'm saying your class I mean BBA 1 and BBA 2। ठीक है, ये सब क्लास के लिए है, आपको अभी बता रहे हैं। अदरवाइज ये जो फंडा चल, दिस प्रोसेस आई बीन डूइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले आपको समझा तो देते हैं कि यह है क्या। तो क्वालिटी सर्कल में आने के लिए when you qualify for the quality circle, you straight away qualify for the Eklavya group. You qualify for the Eklavya group. It means जब भी मैम कुछ बात हो, व्हाट इज एकलव्य ग्रुप? हाँ तो तुम एकलव्य का नाम जानते हो ना? एकलव्य का who was एकलव्य? द्रोणाचार्य से। मैम ही वाज शिष्य ऑफ द्रोणाचार्य। मैम शुरू का ओके ओके, अंगूठा यस काट के दे दिया था तो मैम। ठीक है अंगूठा लॉकडाउन में तुम लोग महाभारत देखा, ठीक है समझ गए। तो Fight for मतलब the Kauravas. उसकी एकलव्य। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? what were the characteristics of एकलव्य? Focused, ma'am, on the Focus. goal. तो इस इमेज में एकलव्य ग्रुप है, एंटायर आपके क्लास का ही नहीं, the entire CIMAGE put together का एक एकलव्य ग्रुप है जिसमें वी कैन डिपेंड ऑन दी स्टूडेंट्स की ये स्टूडेंट को जब भी कहा जाएगा कि भाई फलाने दिन कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ बोलना है, कुछ इंटरव्यू लेना है किसी का, कॉल द एकलव्य ग्रुप। तो हम लोग के पास हमेशा डेटा बैंक रहता है कि दी स्टूडेंट्स आर इन द एकलव्य ग्रुप। वी स्टार्ट कॉलिंग इमरजेंसी में भी वी नीड 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सिमज। तो हम लोग बिल्कुल एकलव्य ग्रुप निकाल लेते हैं, डेटा बैंक निकाल लेते हैं और वहां से जिसको भी रिंग करते हैं, यस मैम आई विल बी देयर। एक बार ऐसा होता है कि वी नीडेड 20 स्टूडेंट्स एंड दे हैव टू इंटरव्यू some figure, some Shweta from आज तक, तो उसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना था और वी वांटेड द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सिमेज। तो ये ऑर्डर आ गया कि भाई 2 घंटे में इकट्ठा हो सकते हैं क्या ये बच्चे, कम से कम 15-20 बच्चे जो अच्छा बोल रहे हैं, हिंदी भी अच्छी बोले, इंग्लिश भी अच्छी बोले, डिसिप्लिन हो, और हम लोग एक कॉल पे वो आ जाए। हाँ सर ऐसे बच्चे हैं। I will not believe it. I just searched this. I just took out my Eklavya group data bank, and within half an hour,
20 to 30 आपका जहाँ क्लास होता है ना BBA बैच 2, वो क्लास कम से कम हाफ फिल हो गया था। तो दे वर डिसिप्लिन कि एक कॉल पे दे कम, दे आर ट्रूली इन द एकलव्य ग्रुप। जो कि आप लोग ये तो शुरू होगा व्हेन द ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट। आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड प्रोसेसिंग, तो मैंने आपको बता दिया। तो इफ यू वांट टू बी इन द क्वालिटी सर्कल एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द एकलव्य ग्रुप, तो दीज आर द स्टूडेंट्स हु जिसको सब लोग जानते हैं। एवरी टीचर knows, every admin know, all the teachers know कि हाँ ये एकलव्य ग्रुप में है। और ये सब बच्चे जो हैं, they are seen, they are heard, they are making presentations, they are smart, they are eloquent, they are speaking, they are interactive, they are focused, they are one thing, CIMAGEs. So if you want to be a true CIMAGEn, if you are a true CIMAGEn, you qualify for the एकलव्य ग्रुप। तो आपके क्लास में कितने लोगों को लगता है? अभी तो कोई भी नहीं, अभी तो I've not written any name। यहाँ पर नेम्स डलेंगे, अभी हमने किसी का लिखा नहीं, हम शुरू कर रहे हैं आज से, देखते हैं किसका किसका नाम आएगा। ये आपके ये हाथ उठाने से थोड़ी ना होगा। यू कैन नॉट रेज योर हैंड कि हाँ हम आई एम, द टीचर विल डिसाइड, नो, द टीचर विल डिसाइड। तो ये हो गया एकलव्य ग्रुप। और ये जो क्लोज ग्रुप है, एक बार अगर आ जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आए यहाँ से निकल गए, कुछ दिन अच्छा काम किया उसके बाद इन लोगों को यहाँ से हटा देना पड़ा, नहीं। You have to retain, you have to be always in the एकलव्य ग्रुप। ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जा रहा है, जैसे रिमूव कर देते हैं हम लोग क्लास से, कैमरा नहीं होने पे इसको निकाल दो, नहीं। दिस सर्कल, once you enter this circle, once in the quality circle, always in the quality circle, ठीक है। तो चलिए नेम्स अभी डालेंगे। I don't know, I'll start from today। दूसरा है ट्राइंग सर्कल। अच्छा, एक और कैटेगरी इसका है एकलव्य ग्रुप का। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन लोग का हैंड्स ऑलवेज रेज्ड, बिकॉज दे आर फोकस्ड। क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके हाथ सबसे पहले उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे व्हेन आई आस्क्ड यू कि हाउ मेनी हैव स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड स्टोरी फॉर नैरेटिव राइटिंग क्लास, किसी का हाथ नहीं उठा था। यही क्वालिटी सर्कल का कोई बच्चा होता फट से हाथ उठा देता। कोई ना कोई कहानी तो सबकी कहानी है, सबकी अलग अलग कहानी है। इट कैन बी रियल लाइफ, इट कैन बी एनी न्यूज, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। अब्दुल रहमान का मैम क्या मैं कहूँ, हाँ, इसलिए तो हटा दिया इन लोगों को। तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फौरन हाथ उठा देते हैं। स्टूडेंट्स हु इन द एकलव्य ग्रुप, स्टूडेंट्स हु आर इन द क्वालिटी सर्कल, दे इमीडिएटली रेज देयर हैंड्स। मैंने आज क्वेश्चन पूछा तो किसी का हाथ नहीं उठा, तो अभी तो क्वालिटी सर्कल में नहीं है कोई। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए हाथ जरूर उठा दीजिए। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू आंसर। अब क्या पूछा जा रहा है? जो पिछले क्लास में हुआ वही पूछा जा रहा है। वी आर नॉट आस्किंग यू एनीथिंग आउटसाइड द सिलेबस, नो, इट वाज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन and you could have raised your hands, but then nobody raised his hands or her hands, anybody, anyways। so ये आपका है एकलव्य सर्कल का ग्रुप, जो कि अभी किसी का नाम डाला नहीं है। then ये ट्राइंग सर्कल है, सेकेंड इज द ट्राइंग सर्कल। अब ट्राइंग सर्कल में क्या हो सकता है? किस कैटेगरी के लोग इसमें आएंगे? Students who are trying to be good. हाँ, स्टूडेंट जो कि हाथ नहीं उठाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया तो ये ट्राइंग स्टूडेंट्स हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उनका नाम पुकारा जाता है कि ओके जितेंद्र आप बोलिए, तो जितेंद्र कुछ ना कुछ जरूर कुछ बोलेगा। जैसे रंगोली हाथ नहीं उठाई है, लेकिन उसको बोले ओके रंगोली टेल मी अ स्टोरी। मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो बुलाने पर वो लोग जरूर बोलते हैं या खड़े होते हैं, कम ऑन द स्टेज। एक बार वो जरूर बोलते हैं कि मैम यहीं से बोले। तो ये ट्राइंग लोग हैं जो अपने मन से दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो क्वेश्चन सामने रहेगा उसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं। दे डू नॉट नो, दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। और उनको खड़े भी किया जाता है, ओके स्टैंड अप
एंड आंसर द क्वेश्चन, तो एक बार वो जरूर हेजिटेट करेंगे और फिर बोलेंगे, अगर कहा जाएगा पोडियम पे आओ तो कहते मैम यहीं से बोले। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन वो बोलते जरूर हैं। बुलाए जाने पे वो जरूर बोलते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अधिकतर लोग इसी कैटेगरी के हैं, पीपल हु आर ट्राइंग। अब थर्ड है, मैंने नाम दे दिया, मैंने कुछ और नाम रखना है अभी, बस ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है। जैसे हमने इसका एकलव्य ग्रुप दे दिया है, वैसे इनका भी नाम हम देंगे, अभी हम नाम नहीं दे रहे। तो द थर्ड इज द लेजी सर्कल। अब बताइए लेजी सर्कल में किस कैटेगरी के लोग आते हैं, बताइए। मैम जिसको आप बुलाएंगे फिर भी वो आंसर ही नहीं करेगा, चुपचाप रह नहीं, जाएगा। वो Ma'am, one who is not बोलेगा attending जरूर। in वो the क्या class. बोलेगा? मैम अगले क्लास में मैम दे देंगे। अगले क्लास में जो दे दे। अगले उनका टुमारो नेवर कम्स वाला होता है मैम ना। एक्सक्यूज बनाएगा। एक्सक्यूज बनाएगा हमेशा कि मैम नेटवर्क इशू हो गया, मैम दिस हो गया, मैम मैं अगले क्लास में दे दे मैम। ऐसे लोग जो कि मैम अगले क्लास में मैं नहीं आया था, पिछले क्लास में नहीं आया था, कैन आई गिव मी द नेक्स्ट क्लास। लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में भी अगर बोलता है कि मैम मुझे देना है, तो स्ट्रेट अवे वो लेजी सर्कल से चला जाएगा वो एकलव्य ग्रुप में, कि वो अपने खुद से इनिशिएटिव ले रहा है। अनसोलिसिटेड प्रपोजल है उसका, पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी करा, हाँ मैम मुझे करना। तो 3 ग्रुप में सबसे शुरू करते हैं लास्ट ग्रुप से। ऐसे लोग कितने लोग हैं जो पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बाद में करेंगे, कल करेंगे, कुछ बहाना उसके पास रहता है हमेशा। हाँ तो बताइए कितने लोग हैं आप जिनको लगता है कि मैं इसी कैटेगरी में हूँ? मुझे पता तो है ही है, आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू। मैम खुद से थोड़े ही ना उठाएगा कोई भी। उठाना चाहिए ना, इफ यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अच्छा कितने लोग हैं, हाँ हाथ उठाना। ये आर्यन का देखिए, ये लोग ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है भाई। विकास को कहा जाता है तो मैम अगली क्लास में दे देंगे, मैम हेडेक हो रहा है, कुछ ना कुछ बहाना रहता है बच निकलने का। बुलाने पर भी, पुकारे जाने पर भी आंसर नहीं देते ये लोग। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बता देते फिर आई टर्न टू द लेसन। जो ट्राइंग सर्कल है, दे ऑलवेज ट्राइंग, बुलाए जाने पर बोलते हैं एंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। और हम टीचर क्या चाहते हैं, जितने ट्राइंग सर्कल के लोग हैं धीरे धीरे वो अपना रास्ता क्वालिटी सर्कल में आ जाए, धीरे धीरे ट्राइंग सर्कल से इस सर्कल में। ऐसा नहीं कि परमानेंटली आप ट्राइंग ही रहिएगा, नहीं, you are in the trying circle but I want you to be included gradually in the in the quality circle. अब क्वालिटी सर्कल में जो है उनको तो निकलने का मौका नहीं है, फिर डोज पूरा शट है, आपको तो निकलने दिया ही नहीं जाएगा। और जो लेजी सर्कल के लोग हैं वो पहले कोशिश करेंगे ट्राइंग सर्कल में आ जाए, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। मैं व्हाट आई वांट इज दैट देयर शुड बी नोबडी इन द लेजी सर्कल, ये खाली रहे, ये भरा रहे, ठीक है, ट्राइंग, पीपल शुड ट्राई, ठीक है। आई डो नॉट वांट टू सी एनीबडी इन द थर्ड सर्कल। किसी के भी नाम आपने खुद से हाथ उठाए, मैंने किसी को नहीं बोला है, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। एक और क्वेश्चन आपको हम पूछ लेते हैं फिर आई विल टर्न टू द लेसन। कितने लोगों को लगता है कि यू हैव द कैपेबिलिटीज एंड स्किल टू बी इन द एकलव्य सर्कल? मैम क्षमता है। एक्सक्यूज मी मैम ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? मेरा क्वेश्चन वो नहीं था ना। कैन यू रिपीट अगेन? You always used to ask irrelevant questions. अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्लास हो रहा है, बस हो गया। बस और क्या। तो इतने लोग हैं, दिस इज वेरी गुड। निशा, अभिषेक, राज, परविंदर, अभिषेक सिंह, प्रीति कुमारी, मनीष एंड सभ्यता, अक्षरा, ज्योति, प्रिया कुमारी, आयुषी। आई वांट मोर एंड मोर पीपल हियर। So it is good that so many people are there
प्रियंका शर्मा क्या हुआ? तुम तो सीआर इस क्लास की हो ना? यस मैम, हम ट्राइंग सर्कल में नहीं आते, हम तो एकलव्य में आते हैं ना। तो एकलव्य मैम की तो बात कर रहे हैं, एकलव्य रही की है। तो बात कर रहे हैं हम। एकलव्य की बात हो म्यूट रही हो है। गया था, आई थिंक उसकी वजह से आवाज नहीं आई होगी मेरे को। अच्छा गुड मैम, या जो बच्चा कभी कभी ट्राइंग सर्कल में रहता है और कभी कभी क्वालिटी सर्कल में, लाइक वो खुद से इनिशिएटिव लेता है, वो किस में जाएगा? खुद से इनिशिएटिव ले रहा है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मैम उसको लगता है कि मेजॉरिटी, समटाइम्स वो वेट करता है कि ठीक है मैम बोलेगी, और समटाइम्स वो खुद से जाता है कि नहीं अच्छा हम इनिशिएटिव लेते हैं, तो फिर वो ठीक है, किस में तो जाएगा? जब समटाइम्स हट जाएगा ना उसका, when Yes, ma'am. the word sometimes वो remove हो जाएगा उसका, then of course he will be in the quality circle definitely. Good. ठीक है, तो इतने लोग क्वालिटी सर्कल में हैं। अब कितने लोग हैं जो ट्राइंग सर्कल में हैं? ट्राइंग सर्कल में तो ज्यादा बच्चे होते हैं, दे आर ट्राइंग, बोलने पर जरूर बोलते हैं वो लोग, तो दे आर इन द ट्राइंग ग्रुप, दे आर बोलने पर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैंक नहीं रहते लोग, कह दिया जाए बोलना है, कह दे कुछ क्वेश्चन। दिस इज सॉरी, दिस इज नॉट ओनली अबाउट माय क्लास, दिस शुड बी, वो हर एक टीचर के लिस्ट में यही होना चाहिए कि पूछा जाएगा द बेस्ट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो सब लोग, ऑल टीचर्स शुड अग्री, राइट? So what I'm taking you a step towards becoming a true CIMAGE in the quality circle. I call it quality circle, but director sir calls it Eklavya circle. So which means true the potentialities of a CIMAGE, right? चलो ठीक है, लेजी ग्रुप को हम अभी नहीं पूछ रहे हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई बच्चा भी रहे। अगर आप एक बार बोल देते हैं कि आई एम इन द लेडी सर्कल, तो लगता है सब तो जानते हैं मैं इसी में हूँ, मैं क्यों इम्प्रूव करूँ? सो दैट इज व्हाई आई हैव लेफ्ट दैट ब्लैंक। चलिए, now we are moving to the, now your time starts now. So if you feel that you have the potentialities to be in the quality circle, now you have to prove that yes you are, right? Now let me continue with my classes. So this is BBA 1 and BBA 2, the names will be put, and I might share this with Megha ma'am or director sir. मैं शेयर करूंगी ये सब चीजें कि भाई इस क्लास में ये बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इसमें बच्चे हैं जो ट्राई कर रहे हैं। I do not want any batch to be blacklisted कि इसमें बच्चे बहुत बदमाश हैं, नहीं, I want all students to be good. So let us start the descriptive style, right? Did we finish the narrative style? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. Now we are using the persuasive style of writing. We are talking about the persuasive style. The persuasive style also is called the argumentative style. Ma'am, what is the meaning of persuasive? To convince. To convince somebody. To use strong words, to say in such a way that the person will believe you, that the person will accept what your proposal. It's like convincing. Persuade का मतलब होता है a strong request. राजी करना, राजी करवाना। आपने कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा बोलना है कि बंदा जो है आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव. It is also called the argumentative style. The very word persuasive means a very strongly requesting, a strong recommendation, an advertisement which you see and instantly you want to buy the thing. कोई इश्तिहार देखते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, तो इतना ज्यादा कन्विंसिंग रहता है कि that you buy the product. You are writing a proposal, you want the reader to, you are convincing the reader, you're writing a persuasive
You're choosing the persuasive style of writing when you are writing a business proposal. For one reason, that you want the reader to read it and take the decision in your favor. Now, why this is called an argumentative style? Because it argues the pros and cons. Like if advantages, and for example, if I give you an essay on the online or online versus offline classes, if this is a debate, so argumentative style of writing always also debates on a topic, the pros and cons. So which is better, online or offline classes? 20% may say offline classes are better. It has its advantages, it has its disadvantages. But some may say, no, we would like to continue with the online classes because it has its own advantages and disadvantages as well. Now, when you are trying to prove your point that we should be given offline classes, you are writing a persuasive essay, trying to convince the reader that let us switch back to offline classes. What you will put? You will put the points, the advantages and disadvantages of online classes. Plus, you will also put the advantages and disadvantages of offline classes. But you will prove your point better. You will prove your point strongly so that the decision cannot always be taken in your favor. तो दोनों पक्ष के बारे में आपको लिखना होगा और अपने पक्ष को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, right? So the pros and cons discussed in argumentative style. Persuasive means a very strong recommendation. Persuasive style when you're writing a cover letter. Persuasive style when you are talking about anything which is a proposal or an advertisement. So all these calls for persuasive writing style or argumentative. So do not be surprised when you asked what are the features of persuasive style. So persuasive and argumentative are the same thing. As you saw that expository writing style and informative writing styles are the same thing. The names are different. So the features are, with persuasive writing, we persuade the reader. We use persuasive writing style to share our point of view with others in such a way that we convince the reader. We want the reader to agree with us, number one. We want the reader to see our point of view. Number three, we want the reader to take action in our favor. So, in a nutshell, we use persuasive writing to share our point of view with others, and we want the reader to agree with us. Persuasive or argumentative writing style is unique. What is so unique about it? It is unique because it has, number one, it has a clear purpose. Clear means clear cut. You are stating something clear cut because you want the person to read and believe what you have written. It is important because you want the reader to take some action. Important purpose, which is clear and which is unique in its own style. So convincing the reader to do something or think something. Do not just read it and forget about it. Read it, think, read it and take action. To succeed in this type of writing, you need a clear goal. So what are the features? Features are, you got to have a clear goal and you need to know what you want the reader to do.
This should be clear in your mind. What you want the reader to do. You want the reader to accept your proposal. You want the reader to do as you have suggested or requested. So know what you want the reader to do or believe after reading your work. So what are the features? This answers the question. The third question, what are the types of persuasive writing? What are the types of persuasive writing? Any writing designed to sell readers on something is an example of persuasive writing. If you want to sell something, what are these people doing, these vendors? When you travel by train, sometimes you see a lot of vendors. They come and they sell. Some people sing and sell. They have that unique style, and you are compelled sometimes, even if you do not need the product, you buy it. Why? Simply, you are convinced. So this kind of writing takes many forms. Let us talk about advertisements. Getting back to you, what do you mean by the term advertisement? What is advertising? To making aware of your products and something like you want to. Okay. What is the purpose of advertising? So that people can get aware about the product which we So are that the people advertising. can be aware and people can promotion, the sales main promotion, purpose or objective of advertisement is sales to pitch. motivate and aware and Okay, encourage Raviraj. about Okay, समझ गए. Positioning in the mind of customer. Exactly. all the people. So is there any advertisement which you have seen and you have bought the product? Any advertisement which was convincing? Yes, anyone? Some ads you like. Some ads you do not like that much. Some you do not like at all. Isn't it? So can you tell me what are some advertisements you like a lot and you're so convinced that you buy it? You make others buy the product. किसी और को भी आप recommend करते हैं कि buy this. Chocolate product. Chocolate. Chocolate, cosmetics. Ma'am, Cosmetics. Maggie. Food. Maggie, every child, like not every Course, child, ma'am. I think this is one thing which the sale has never gone down. So you reach out for Maggie. Supplements advertisement. Yes. So and sometimes something you use it's a trial order and then it's a routine order. So Maggie is a routine order. Like you bought it once, you tasted it, and it is here to stay. So Maggie is one thing which is very convincing. Why? Tastes good. Takes hardly 2 minutes to prepare. Ma'am, And- beauty purpose, ma'am, Garnier Fair Wash. Ravi Raj, Fair what are you Lovely. talking about? Beauty product. James Okay. beauty product. So convincing लगता है कि what do you buy of Garnier? Can you, Ravi Raj, can you explain? Have you bought anything, any product of Garnier? अब ले चुप हो गया ये. मेरा क्वेश्चन है कोई ऐसा कन्विंसिंग एडवर्टाइजमेंट तुमने देखा जो तुम इंस्टेंट क्लिक हो गया? मैगी तो ठीक है, वेरी गुड. Any other thing which you saw on television and then you said no, this is a must buy? Supplements. Yes. चाय पत्ती. हम देखेंगे कि मैम ब्राइटनेस कंप्लीटली देता है. विटामिन सी सीरम ऑयल उसमें इस तरह साइड में बोलते हुए दिखाता है कोई क्रिकेटर या एक्टर को. गार्नियर का प्रोडक्ट. इसीलिए भाई इतने हैंडसम हो तुम. मैम बूस्टर का भी एडवर्ट. Chalo, anyways. So this is any kind of advertisement. The goal is to convince the buyer, the customers, to buy the product. It is always asking for
a sales pitch, right? So when I ask you to write something on what do you understand by persuasive writing, you can give me the ad of any. Can you make an ad? क्या बना सकते हैं आप लोग? There was one very beautiful activity, ad mad show. Ad mad show communicative fest जो हुआ था हम लोगों का, होता है जो कम्युनिकेशन फेस्ट, उसमें एक इवेंट है, एक्टिविटी है एड मैड शो, जिसमें स्टूडेंट्स को 2 मिनट टाइम दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट पर आप एड बनाइए. इट कैन बी एनीथिंग. स्टूडेंट्स हैव डन दिस, और ऑन स्टेज it happened in Adhivesan Bhavan, and the finalists, there were 2 groups who competed, and they were given a topic on the moment, extempore, कि तुमको इस टॉपिक पे तुमको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, एड मैड बनाना है. So they created an ad. There were some students who acted, some for what चिंकारा कफ सिरप बना दिया था, कोई ऐसे ही कुछ बनाया लोग, but it was very good. So this, आप वापस आओ लौट के, तो फिर ये तुम लोग करते हैं ऑफलाइन में, ये creating an ad mad show. Since you are into BBA class, management class, students should always do this, creating an ad. How many of you think you have the capability to create? जो आप ad देखते हैं television पे, people who act in ads. मैम प्रोडक्ट्स भी खुद से बनाना था. प्रोडक्ट तो ऐसे ही फेक रहता है ना. जैसे कोलगेट टूथपेस्ट है, तो कोलगेट टूथपेस्ट नहीं करके उसका नाम बदल दीजिएगा, बोलगेट टूथपेस्ट. तो बोलगेट टूथपेस्ट मतलब तुम स्माइल क्यों? व्हाई डोंट यू स्माइल? आई नेवर सी यू स्माइलिंग. आई डू नॉट स्माइल बिकॉज ऑफ माई टीथ. ओह, यूज कोलगेट टूथपेस्ट एंड स्माइल. और ये बच्चे करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट, बच्चे एक्ट भी करते हैं एंड दे कम विद दिस. तो इंस्टेंट थिंकिंग हो जाता है. दे आर वेरी क्रिएटिव. स्टूडेंट्स हैव डन दिस. मैम जैसे माउंटेन ड्यू का, माउंटेन ड्यू का, फिर उन लोगों ने परफ्यूम का किया था. उन लोगों ने फॉग जो स्प्रे है उसका लोग किया था, उसको जॉग बना दिया था, और उसको लोग यूज दिस एंड बी हैप्पी. तो ये सब आज कुछ तूफानी करते हैं, पेप्सी का टैगलाइन. हाँ, तो पेप्सी का चोरी नहीं करना है, आपको अपना बनाना है. ठीक है. And these activities are so good. In a class, 2-3 students मिलके अपना बनाते हैं, and it was a beautiful event. I have all this in mind for your class, but let us get back in offline classes and we'll get back with a bang. So any kind of advertisement is a type of persuasive style. The next is, you already know, type of persuasive style, business proposals. Why you are the best. Why your proposal is the best match for your need. You have to be your convincing best when you're writing a proposal, right? Then persuasive writing can be your college admission essays, entrance tests. You all must have given this essay on why do you want to take admission in CIMAGE. Yes, ma'am. Any descriptive आपने लिखा होगा. ठीक है. That is also a persuasive. You're writing in such a way so that you are selected for admission. Many students have given this blank. लिखा नहीं कुछ, English उतनी अच्छी नहीं है. But well, some did write. Cover letters. Can anyone tell me what is the cover letter? ये business letters में पढ़ाया गया था. Yes, this is what? Motivation letter. Cover letter is a motivation letter? No. किसने कहा motivation? प्रदर्शनी नहीं.
A type of business letter क्या होता है? What is cover letter? बिजनेस लेटर्स में कम से कम 3 वीक्स हमने टाइम दिया था आपको, भूल गए? Ma'am, CV, applying CV for CV. What CV? CV is for not for Ma'am, freshers. Resume. Ma'am, yes. a formal which you formal want business send letter. other documents. सबिता तू कुछ बोल रही हो? 1 minute Ma'am, a प्रियंका. formal business letter. हाँ तो किस चीज के लिए? What will be the content in cover letter? Ma'am, it is a introduction letter. किसका इंट्रोडक्शन? तुम्हारा इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन? Employer. हाँ, employee. Okay, yes. A cover letter supports your resume. Whatever you write in your resume, this is bulleted or this is in points, you elaborate that in detail in a cover letter. Like resume is a resume, and how you have prepared yourself for this kind of job. This is your kind of a short essay, short business letter, which should not be of more than 2 paragraphs. How you have prepared yourself for this job. So this is the cover letter. And any resume, when you're applying for any company, you should always support it with a cover letter. Sending only a resume without a cover letter is not done today. In today's world, you need to support it with a cover letter. Let me conclude this. And then elevator pitches, it means something which you want to highlight, enhance, कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लिफ्ट करना चाहते हैं, उसको भी, उसमें भी आप you're going to write. Supposing you want to convince me that yes, convince me that you are fit for this group. Convince me that why you should not be kept in the quality circle. Convince me and I will put you here. Any elevator pitches, anything, any skill which you want to enhance, lift. Elevator, सब जानते हैं क्या है? Elevator is a lift. Anything which lifts. Letter of recommendation. क्या मतलब होता है इसका? Letter of recommendation. भाई तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम अच्छा काम करते हो, ऑनेस्ट हो, और तुमको हम किसी कंपनी में रखवाना चाह रहे हैं. So I will give you a recommendation letter that this boy is working and he's studying in CIMAGE and he's a good person and he can be kept for internship in your company and he is of a good character. This is a letter of recommendation. किसी के लिए कुछ अच्छी बातें लिखना, so that the person can get a job or person can Quality. हाँ, any quality. Yeah. Opinion, editorial articles, your opinion about anything. Why you strongly believe this? क्यों आपका opinion ऐसा क्यों है? और मैं आपके opinion को से सहमत हूँ? मैं क्यों agree करूँ आपके opinion को? You have to convince me for that. In the newspaper, any editorial articles are persuasive. Any product review. जैसे अभी मैगी के बारे में बात हो रही थी, उसका रिव्यू लिखिए आप. You have seen a movie. किसी मूवी का रिव्यू पढ़ के तब हम देखने जाते हैं कि ये कैसा है. The review should be convincing. And then any sales pitches, anything that regards the promotion of sales, the strategies which you use for sales pitches is also persuasive writing style. How come 2 persons are waiting at this last hour? जबकि 3 minutes में the class will give over. Who are these people? They're coming at this time. Mansi and Rohit Kumar. लेजी ग्रुप के हैं वो लोग. नहीं, लेजी ग्रुप के लिए भी नहीं है. लेजी ग्रुप के होते तो कब देर से ज्वाइन करती, इतनी देर से. Ma'am, what is sales pitches?
किसी चीज की सेल्स को आगे, strategy to use to improve sales. Ma'am, increase, Increase, yes. encourage हाँ, someone to buy हाँ, something. हाँ, yes. Sales pitch. सेल्स को बढ़ाना. किस तरह से सेल किसी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? व्हाट स्ट्रेटजीज विल यू टेक? विल यू इंप्रूव द प्रोडक्ट? विल यू इंप्रूव द पैकेजिंग? व्हाट विल यू डू? सेल्स पिच करने के लिए बहुत स्ट्रेटजी यूज करना होता है ना, कि सो दैट दिस प्रोडक्ट वर्क्स. बस ये साबित कर देंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट है उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो मेरा प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा. कभी कभी बहुत अच्छी चीज भी है और उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है. आई रिमेम्बर स्टोरी अबाउट एक ओरल कॉस्मेटिक्स वाले कंपनी हुआ करती थी. द प्रोडक्ट वाज रियली गुड. द प्रोडक्ट वाज गुड, बट व्हाट हैपेंड? पैकेजिंग इतनी खराब थी. एक बार इंसान जो ले जाता है खरीद करके, he is so damn satisfied, और the next time when he wants to buy the same product, he wants to see कि क्या नाम था उसका. नाम वाम पूरा मिटा होता है. मतलब packaging was horrible. So people used to come and say कि what was that when they used to come to buy the product. तो सेल्समैन से पूछते हैं कि वो क्या आपने दिया था? तो मैंने क्या दिया था मुझे नहीं याद, आप बताइए क्या नाम बताइए. अब नाम मुझे याद नहीं, इसलिए कि जो उसका व्हाइट पे लाइट ब्लू से कुछ लिखा हुआ था. ठीक है, एंड वो मिट गया था. तो the marketing manager was continuously reported this, and they had to change the packaging. So for the sales pitch, they had to change the packaging of the product. So कभी कभी बहुत अच्छी product भी click नहीं करती है because of some packaging not good. कोई बहुत अच्छी चीज click नहीं करती है because advertisements नहीं हुआ है. ठीक है. So you will also know in your curriculum what is the importance of advertisement. पढ़ेंगे उसको आप, strategies क्या है. So what is advertisement? You'll all know this, and any kind of advertisement falls under the group of persuasive writing style. Any questions before we leave? Elevator pitches, can you repeat? किसी चीज को आगे बढ़ाना, लिफ्ट करना. Okay, ma'am. ठीक है. We'll discuss this in the next class, and then we'll move on to the descriptive style of writing. That's it for today.